Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Student, we have discussed about our first chapter, which is about the organ system of our body, and we have already discussed the first important system, which was the digestive system. Today we are discussing about another most important system, which is respiratory system. Respiratory system, as you know, the system of breathing, कि सांस लेने का अमल जो है उसको हम respiration के तौर पे जानते हैं. First of all, respiratory system is a system of respiration. And how can you define the respiration? Respiration जो एक common सी एक misconcept या एक incomplete definition जिसको आपको पता है वो है कि सांस लेने के अमल को हम breathing को जो है वो respiration कहते हैं, but it's not complete. It's breathing is only the first step. So respiratory system is the system of respiration. Now, what is respiration? First, I want to tell you that respiration has two different steps. The first step and the second. The first step is breathing. The first step is breathing. And the second one is the cellular respiration. Now, what is breathing? Breathing in which the exchange of gases take place. Simply, you can define the breathing as the exchange of gases in which we intake oxygen and exhale carbon dioxide gas. ठीक है? Exchange of gases. And the next one is cellular respiration. The next step of cellular respiration, or it is also known as the internal respiration. Internal respiration, breathing is the external respiration and cellular respiration is the internal respiration. As I told you that breathing is simply, you can say, the exchange of gases in which we intake oxygen and exhale carbon dioxide. And what happened in the cellular respiration, the oxygen is utilized. जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन इनटेक करें, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन क्या कर रही है. जाहिर सी बात है कि जब से हम पैदा हुए हैं उस वक्त से हम मुसलसल सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं वो ऑक्सीजन आखिर क्या काम कर रही है बॉडी के अंदर. द पर्पस ऑफ इनटेकिंग ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ये बात भी आपको पता है कि फूड की जरूरत क्यों है? बिकॉज for the life activity, for performing the life activity, we need energy, and for that energy we need food. जिस तरह के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फूड को कन्वर्ट होना होता है उसके सिंपलर फॉर्म में ताकि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके. अब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसमें से उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, हमारी बॉडी को उस एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? हाउ वी कैन गेट दैट एनर्जी? बाय द ऑक्सीडेशन, और इट्स सिंपली यू कैन से द बर्निंग. And for burning, oxygen is necessary. In the absence of oxygen, burning does not happen, does not occur. ठीक है? For that purpose, burning of food. फूड जो भी हमने इनटेक किया है उसमें से एनर्जी हासिल करनी, हमारा मेन मकसद, मेन पर्पस क्या है? उसमें से एनर्जी को हासिल करना ताकि हम डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. फॉर दैट पर्पस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड and the process is called as oxidation or simply the burning. ठीक है, फूड जब बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर मेटाबॉलिक वेस्ट.
तो जब हम रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, रिस्पायरेशन में जो एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, फूड के नतीजे में ऑक्सीजन हमने इनहेल की, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई फूड को बर्न करने में, और फूड की जो बर्निंग हो रही है उसके नतीजे में हमें क्या चीज मिल रही है? एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड देन एक्सेल through our nostril, and that process is exhalation. Breathing. The first step, breathing. The first step, breathing. Now, breathing also comprises in two steps. Inhalation and exhalation. Inhalation and exhalation, you can remember it as in, the word in. The word in means the intake of oxygen. Inhalation, we take in oxygen, which is further utilized in the oxidation of food and burning of food for the production of energy. Exhalation, the word exit, x comes from exit, इसका मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या चीज एक्सपेल आउट होगी, क्या चीज रिमूव होगी आपकी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ हार्मफुल गैस, हार्मफुल सब्सटेंस, और यू कैन से इट इज अ वेस्ट मटीरियल, ठीक है। एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। एंड also, I told you that breathing is the external respiration. External respiration. So, the phenomena of external respiration, you can simply इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि the exchange of gases या exchange of material between the cell and the environment. इसमें एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आपकी बॉडी के बाहर का एनवायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर, इट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एंड फॉर इंटरनल रिस्पायरेशन, विच इज द cellular respiration, the next step was the cellular respiration. In cellular respiration, oxidation of food take place, and cellular respiration is the internal respiration. Internal respiration that happens inside your body, within the cell. सेल के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही रहते हुए मटेरियल्स का एक्सचेंज और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी यूटिलाइज कौन कर रहा है? आपकी अपनी बॉडी ही करी। तो जितना काम हो रहा है विद इन योर बॉडी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज the different parts or organ which are involved in respiration. We are going to discuss organs which are involved in respiration. Again, it's an organ system which have different organs involved in respiration. इसके different parts हैं. The first one is nostrils. The next one is larynx. The third one is trachea. The fourth one is bronchi. And the fifth is the lungs. As we considered that lungs are the main respiratory organ, but lungs did not work individually.
The group of organs are involved to perform a function of respiration, and it comprises in different parts: the nostril, larynx, trachea, bronchi, and the lungs. I am repeating: nostrils, larynx, trachea, bronchi, lungs. The air enters through our nose. Air enter होगी. Then behind the nostrils, a pharynx, a wide short tube is present, which is called as pharynx. We have discussed pharynx in our previous lecture. Air enters through our nostrils. Everybody has a pair of nostrils, and behind the nostril, nasal cavity is present. Just behind your nose, nasal nostrils, a cavity is present, and behind the cavity, a short white chamber is present, which is called as pharynx. Pharynx we have discussed in the digestive system as well. It is a common passage between the digestive system and the respiratory system. Pharynx opens in a larynx. Larynx is a tube which have a vocal cord, which produce sound, which produce voice. That's why it is called as voice box. Larynx is also known as voice box. Why it is called as voice box? Because it have vocal cords, ठीक है, which produce sound. जिस तरह गिटार के वायर्स होते हैं ना, उसके स्ट्रिंग्स होते हैं, उसको जब हम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. बिल्कुल इसी तरह हमारी नेजल कैविटी के पीछे जो लैरिंक्स का चैम्बर है, उसके अंदर डिफरेंट कॉर्ड्स मौजूद है. ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस होती है, हम कुछ बोलना चाहते हैं और एयर एंटर होती है, तो उसके जो स्ट्रिंग्स हैं, उसके जो कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. देन वॉइस बॉक्स के बाद जो हमारा द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लैरिंक्स इज ट्रेकिया. ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप. ठीक है, it is a long tube and it is present just in front of your neck. ठीक है, ये जो यहाँ पे सांस की नाली जिसको हम कॉमनली कहते हैं, it's a windpipe trachea and it's a soft muscular tube which is protected by 15 to 16 half C-shaped cartilage. इस तरह से हाफ सर्किल, पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं होता. ये भी जो भी हमें हार्ड स्ट्रक्चर कार्टिलेज जो हम टच करते हैं यहाँ पे, यू कैन चेक. ठीक है, तो ये सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो कि उस ट्रेकिया को प्रोटेक्ट कर रहा है कोलैप्स होने से. ठीक है, 15 to 16 इन नंबर होते हैं, हाफ सर्किल होते हैं. ठीक है, इस तरह से. नाउ देन आफ्टर द ट्रेकिया और विंडपाइप, इट splits into two branches. That branches are called as bronchi, और अगर सिंगुलर कहेंगे तो हम bronchus कहेंगे, but they are two in number, that's why we call as plural bronchi. Each bronchi opens in the lungs. There are a pair of lungs. Now, lungs को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Lungs are soft, spongy or pink in color elastic organ which have numerous fold. As the air enters, अगर इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? इलास्टिसिटी नहीं होगी तो एयर को मजीद स्पेस नहीं मिल सकेगी.
इसलिए देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या ही कुदरत रखी है कि इसको इलास्टिक इन नेचर बनाया है कि जैसे ही इसके अंदर हवा एंटर होगी इट सर्व्स एज द बलून, इट एक्सपेल, इनकी जो फोल्डिंग्स होती हैं वो ओपन हो जाती है, इसका एरिया मजीद बढ़ जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ लंग्स present. Now the bronchi, trachea divides into two tubes which are called as bronchi. Bronchi are further divided, further branched into the bronchioles. Further branched into the bronchioles. They are named as bronchioles. Bronchioles. Now the bronchioles, at the end of bronchioles, यहाँ पे देखिएगा ये bronchioles मैंने ड्रॉ किए। अब at the end of bronchioles a tiny air sacs are present. इस तरह से छोटे छोटे air sacs मौजूद होते हैं which are called as alveoli. Which are called as alveoli. और सिंगुलर होगा तो alveolus. They are appear as the bunch of grapes. जिस तरह अंगूरों का गुच्छा देखा है कि एक साथ किस तरह से होते हैं, मल्टीपल इन नंबर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई alveoli are present. They are tiny air sacs. In alveoli the exchange of gases occur. ठीक है, पैसेज पूरा वही है, नॉस्ट्रल से एयर एंटर हो रही है, देन इट एंटर्स इनटू द फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई एंड फाइनली रीचेस टू द alveoli. Here the exchange of gases occur. जो ब्लड, अब ये alveoli की सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो फिर क्या होगा, उस ब्लड में से, कैपिलरीज की ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड alveoli में चली जाएंगी और alveoli के अंदर क्या एंटर हो चुकी है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होगा और ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होगी, ब्लड में एंटर होगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो alveoli में आ गई, ठीक है, ये alveoli में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेम रूट पे ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड नॉस्ट्रल्स, जब हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में शामिल हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हेल्दी फ्रेश जो ब्लड था वो फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। आई होप स्टूडेंट you understand all the organs and their functions. Beside this, we are going to discuss diaphragm. What is diaphragm? Diaphragm is a muscular sheet. It's a dome shape. It's a dome shaped muscles which are present under your lungs. ठीक है, lungs के नीचे ये डोम शेप का एक मस्कुलर शीट इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जैसे ही हम ये मसल से, मस्कुलर शीट्स है तो इसके अंदर रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे ही एयर एंटर होती है लंग्स में, उसको एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए, तो क्या होता है, ये डायफ्राम इट बिकम फ्लैट। ये इसका एक्चुअल शेप है, इसके अंदर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड इट विल बिकम फ्लैट। जैसे ये फ्लैट होगा तो लंग्स को स्पेस मिल जाती है, लंग्स को फैलने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए स्पेस मिल जाती है, और जैसे हम एक्सेल करते हैं लंग्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हुए और डायफ्राम अगेन रिलैक्स हो जाएगा, अपनी एक्चुअल शेप में आ जाता है। नाउ स्टूडेंट, आई हैव अ model for you that in which you can see the two orange balloon which are representing the lungs and the straw represents the trachea. When I blow air in it, the balloons expand just like that. You can see here, and ये चीज जो नीचे बलून लगाया हुआ है, इट serves as the diaphragm. As I told you that it is a muscular in nature and it has the ability to contract and relax. When I move the diaphragm, just like that, the balloon
gets air, it becomes larger, it expands, and when diaphragm comes to its actual place, the lungs release air. You can see again, just like that.